Hello everyone. I hope you're doing well. So today I'm here with another video talking about strategies to be followed in board exam. My name is Tamanna Sharma, PGT English, CBSE resource person and evaluator. Now in this video I'll be talking in detail about the strategies. So first thing is the time management. So as you know children, when you attempt any exam, time management plays a very important role, right? और अपना टाइम मैनेज करने के लिए यू हैव टू टेक सम मॉक टेस्ट, attempt some sample papers, and so that you are able to allocate your time effectively, right? और जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, you have to skim through it. You have to see the difficulty level. You have to see which section you will be able to attempt first, right? So you plan in your mind that मैंने ये वाला section first करना है, उसके बाद ये सेकंड करना है, उसके बाद थर्ड, बिकॉज देयर आर 3 sections एज यू नो इन इंग्लिश एग्जाम. सो टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज, नाउ व्हेन यू रीड द क्वेश्चन पेपर, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आप चूज करते हो कौन सा सेक्शन फर्स्ट मुझे करना चाहिए, राइट? सो डिसाइडिंग विच सेक्शन टू टैकल फर्स्ट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस योर एग्जाम परफॉर्मेंस. ओके, तो आपने तीनों सेक्शंस में से आपने रीड करना है केयरफुली और देखना है which section you are able to attempt easily. If I talk about class 10th board exam, their comprehension passage, the difficulty level is high, the vocabulary is high, and you feel that you are not able to comprehend it easily, you can start with section B first. You can do grammar, you can do creative writing, you can move over to the literature, and then finally you can do your comprehension. If I talk about class 12th board exam, their comprehension passage is not very difficult. The only problem is the question paper is very lengthy. Children are not able to complete it. So children, आपने क्या करना है? Immediately, अगर आपको लग रहा है section A easy है आपके लिए, the comprehension level is fine, the vocabulary is fine, and you are able to comprehend it nicely. So you start with section A only and try to complete it within 1 hour, or in fact before 1 hour. Then you move over to creative writing and then finally to your last part, that is literature portion, because that contains 40 marks, right? अब क्या करते हैं कई बच्चे, पहले वो लिटरेचर पोर्शन करते हैं, फिर क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, और जब तक वो सेक्शन ए की तरफ आएंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, दे हार्डली हैव 25 मिनट्स और हाफ एन आवर, और उनका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूरा छूट जाता है. तो आपने ये नहीं करना. यू हैव टू प्लान accordingly and you have to see that whatever time is allocated, accordingly आप अपना question paper complete करें. Now, talking about the length of answers, it should be according to the marks distribution, according to the word limit. Word limit is given in the question paper, right? So class 10th के लिए 40 to 50 words, class 12th के लिए 30 to 40 words, whatever the word limit is there. So you have to stick to the point and you have to give direct answers. And the answers, they should be concise and comprehensive, right? Short answer type questions के लिए आप short questions लिखेंगे. Maybe 3 to 4 sentences are more than sufficient. If it is for 2 marks, then 2 to 3 sentences. अगर long answer है, obviously आपको you have to structure it nicely. All right, irrelevant information nahi deni hai. You need to have proper, introduction, middle, and end. Right? Obviously, the marks distribution and the word limit has to be kept in mind. कई बार ये देखा गया है जो बच्चे हैं 2 marks का question है, full answer लिख रहे हैं. Recently we had exam in our school. बहुत सारे बच्चों ने 2 marks के full pages लिखे हुए हैं. The examiner is not looking for that. The examiner is looking for the right content. That is very, very important. Okay, the marking scheme. So children, you have to go through the marking scheme. Just see 3 marks question, 6 marks question, which are coming in board exam for class 10th. As for 12th, it has marks for content, expression, and accuracy. I have already spoken about expression and accuracy in my previous video. If you don't know what is expression and accuracy, please go through my previous video. You will be able to understand. So the examiner is giving you marks for the content, expression, and accuracy, and accordingly you need to write your answers. Now, last but not the least, you have to keep at least 10 minutes for revision. अब रिवीजन अगर आप टाइम नहीं रखेंगे तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी, ग्रामर मिस्टेक्स हो जाएंगी, और उसके मार्क्स कटते हैं आपके.
राइट? अगर आप रिवाइज करोगे, यू कैन जस्ट गो थ्रू योर mistakes and you can correct them. And very important that revision also allows you to add any missed points. कोई आपने क्वेश्चन मिस कर दिया, कई बार हम सोचते हैं हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, और बाद में आपको टाइम ही नहीं लगता है, राइट? बिकॉज इंग्लिश पेपर्स बहुत लेंदी आते हैं, तो इस चीज का अपना ध्यान रखना है. एंड very important चिल्ड्रन, प्लीज डू नॉट मिस एनी क्वेश्चन. कुछ ना कुछ आपने आंसर्स लिखना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कंटेंट के मार्क्स होते हैं. सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन. कई बार बच्चों को सपोज कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, उसके 4 ऑप्शंस है, आपको कुछ तो लिखना ही चाहिए. 4 में से कोई भी आंसर आपको रेलिवेंट लग रहा है या नियर टू द आंसर लग रहा है, मे बी यू आर नॉट श्योर, स्टिल यू शुड राइट इट. डोंट लीव द आंसर ब्लैंक, डोंट लीव द क्वेश्चन ब्लैंक. ना अपने टाइम उसमें लिखो, whatever you want to do, you have to write the answers, but don't leave it blank. Basically, I want to say that, right? All right. So I hope all these points you will keep it in mind, and definitely, if you will keep all these things in your mind, you will pass out with flying colors. Thank you, all of you.